Yeah, everyone is proud of Sri. Even I am proud of myself. You must be. You really were far-sighted. You thought कि हाँ मुझे ग्रेजुएशन के साथ साथ USCA में भी करना है, फाइनेंशियल मॉडलिंग के टूल से एनहांस भी करना है अपने आप को. So like from where did all of this vision come into the picture? वॉल स्ट्रीट स्कूल से जैसे मैंने अभी फाइनेंशियल मॉडलिंग क्लासेस अभी कंप्लीट करी है. दैट वाज अ शॉर्ट कोर्स, एक शॉर्ट टाइम पीरियड में आपका कंप्लीट हो सकता है एंड साइड बाय साइड आप अपने दूसरा काम भी कर सकते हैं उसके लिए. इट टुक मी 2 to 3 months कोर्स कंप्लीट करने के लिए एंड एब्सोल्युटली द क्लासेस वर वंडरफुल. मैं एक कंफर्टेबल बैकग्राउंड में बैठ के, कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में बैठ के मैंने वो क्लासेस अपने अटेंड करी हैं और एब्सोल्युटली दैट वर अमेजिंग. कुछ तो डिफिकल्ट रहा होगा, टेल मी द टफेस्ट पार्ट इन द एंटायर जर्नी. सो Hello everyone and welcome to another podcast here at the Wall Street School. आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज माई स्पेशल गेस्ट इज समवन जो कि आप सब जेनजी के स्टूडेंट्स रिलेट कर पाओगे. बट शी इज समवन हु इज ऑलरेडी स्टैंडिंग आउट फ्रॉम ऑल ऑफ यू आउट देयर प्रोबेबली. व्हाई सो? ये आपको पॉडकास्ट में पता चलेगा. Let me very quickly welcome my guest for tonight, Bhumika. Hi Bhumika, welcome to the podcast. Hi Shiltu ma'am, thanks for your kind introduction. I am very thankful to you to bring me here today. Wonderful. तो quickly Bhumika को introduce करती हूँ. She is a Gen Z, which all of you might have guessed by now. Looking at her, बहुत छोटी सी प्यारी सी लग रही है. But believe you me, she is someone who is extremely hardworking, very, very career focused right from the time she started off with her graduation. Because इसको पता था, like most of your Gen Z students as well, कि सिर्फ graduation तो काफी नहीं है. We need to add on a professional qualification along with graduation to be able to stand out from the immense competition which is out there. So Bhumika chose her USCMA qualification to pursue along with graduation. तो अब बात करते हैं भूमिका की पूरी जर्नी के बारे में स्टेप बाय स्टेप. So Bhumika, let's begin with you are very early on your schooling, graduation. शुरू से बताओ कहाँ से क्या क्या किया. I am a BCom graduate from Shri Guru Gobind Singh College of Commerce, University of Delhi. And I have just completed my financial modeling classes. That was also from the Wall Street School. Wonderful. तो मतलब बताओ कि you're so young, आप भी ग्रेजुएशन के साथ साथ you really were far sighted. You thought कि हाँ मुझे ग्रेजुएशन के साथ साथ USCA में भी करना है, फाइनेंशियल मॉडलिंग के टूल से एनहांस भी करना है अपने आप को. So like from where did all of this vision come into the picture? किसी ने गाइड किया था आपको कि आप शुरू से आपको पता था कि this is exactly what I want to do? क्यों किया USCA में, like where did it come from in the picture? Okay, so basically I was I was in finance field. I had so much interest in finance. I love to play with numbers and from the very beginning I knew कि मेरे को basic class में तो कॉमर्स ही लेना है स्कूल में. And by that मेरे को थोड़ा idea लगा and obviously I did searches as well. I took consulting from the Wall Street School only and yeah, I thought why should not give a try to filing things. So basically आपने अपने fashion को अपना profession बनाना चाहा and that is exactly what makes sense as well. So because if you end up doing what you really enjoy, it all that hard work तो obviously लगेगा ही लगेगा, पर वो effort जो है you enjoy the process as well. I enjoyed the process. I love the learning because it's not just theory and just memorization. You actually go deeper in the concepts. आपको concept समझने पड़ेंगे उसके और that is actually fun. तो क्या लगा मतलब भूमिका, मतलब स्टूडेंट्स को मतलब बताओ students who are presently pursuing their graduation, is it easy, is it difficult, is it overwhelming कि ग्रेजुएशन के साथ साथ आपने USCMA को कैसे बैलेंस किया? फेस्ट वगैरह कॉलेज लाइफ एंजॉय करी कि सब छोड़ना पड़ा? No, I absolutely enjoyed my college life. आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है. You just have to give 2 to 3 hours every day. That's enough for you. आप अगर consistent रहेंगे, आप अगर अच्छे से मेहनत करेंगे, you will definitely clear the CMA Part 1 exam. Wonderful. I think you've been very focused in terms of कि करना क्या है. College life definitely enjoy करनी है. This time is not going to come back ever again. And this is something that I always tell all my students कि ज़रूर अपनी full time college life को भी enjoy करो. हाँ, साथ साथ में एक professional qualification को जब आप club कर लेते हो and उसको consistently आप effort के साथ पढ़ रहे हो, which is very easily manageable, तो आप दोनों चीज़ें आराम से कर सकते हो.
and by the time you graduate, you're not just someone who's, you know, just a BCom graduate, but you are someone who has the additional skill set also, Exactly. which all employers are basically, you know, looking for. Right. तो ये तो रहा easy वाला part, मतलब how you were able to manage. कुछ तो difficult रहा होगा, you know. Tell me the toughest part toughest part in the entire journey so far, basically. So what was toughest for me, if we talk about the CMA studying part E was somewhat difficult for me. Actually, उसमें theory ज़्यादा है, and students like us go for practical as well, right? So yeah, part E was somewhat bit difficult, but I took the help from the faculty and they obviously supported me, so that made easy for me as well. Wonderful. So, I mean, you know, I think you've just led me to my next question, really. Ki how important do you really thought that, you know, that entire process of the trainings by the Wall Street School, your mentor being there, your trainer being there, how was the entire environment, you know, that made it possible for you, basically? Right, with the help of the Muzul Kazim sir and obviously with ma'am Shilpi ma'am, they both guided me very well, and because of them I am here only. Wonderful. So that's exactly, you know, why we are here, basically, to support all the students, to guide all the students. Right, they never back off to give me support. उन्हें हमेशा support किया है मेरे को. थैंक यू सो मच. एक्चुअली होता है कि एज स्टूडेंट्स ऑब्वियसली कई बार ओवरवेलमिंग हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए कि मैम सेमेस्टर एग्जाम्स भी आ गए हैं एग्जाम, और सीएमए की एग्जाम्स के लिए भी पढ़ाई करना है, तो कैसे बैलेंस करें. कभी इंटरनल्स क्लैश होते हैं, कभी एग्जाम्स क्लैश करते हैं. सो इट्स ऑल पार्ट ऑफ द प्रोसेस बेसिकली, यू नो, टू बी एबल टू बैलेंस पढ़ाई. बीकॉम की पढ़ाई भी ज़रूरी है, आपके ग्रेजुएशन की भी ज़रूरी है, प्लस हाउ डू यू बैलेंस द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन. बिकॉज जो अल्टीमेट वो एक्स फैक्टर आपके सीवी में बढ़ेगा, दैट विल बी द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन दैट यू हैव डन. राइट. इन बिटवीन जब कॉलेज के एग्जाम्स आते थे, देन आई फेस डिफिकल्टी इन बिटवीन, बट या आई हैड टू मैनेज वन. जब बीच में लंबे गैप्स मिलते हैं आपको एग्जाम्स के लिए, तब यू कैन स्टडी फॉर CMA, यू कैन एब्सोल्युटली मेक टाइम फॉर दैट. आई थिंक इट्स ऑल द एक्ट ऑफ बैलेंसिंग. तो आप वर्क लाइफ बैलेंस जैसे हम सब प्रोफेशनल्स करते हैं, वैसे ही एज स्टूडेंट्स आपको अपनी इंजॉयमेंट वाली लाइफ भी बैलेंस करनी है, आपको अपनी पढ़ाई वाली लाइफ भी बैलेंस करनी है. आई नेवर वो स्किल सेट आई थिंक मतलब बहुत अर्ली ऑन, यू नो, यू हैव टू लर्न टू हाउ टू बैलेंस बेसिकली. या आई नेवर गिव अप माई ट्रिप्स. मैं ट्रिप्स पे भी गई हूँ. आई एंजॉयड माई फेस्ट एज वेल. मैंने एब्सोल्युटली अपनी कॉलेज लाइफ पे फोकस किया है और CMA पर भी फोकस किया है. Wonderful. So, one more thing that, you know, Bhumika, that you've done that really makes you stand out from the crowd is कि आपने BCom तो करा ही है, साथ साथ में आपने अपनी USCMA की जर्नी को स्टार्ट करा, पार्ट क्वालिफाई ऑलरेडी कर चुके हो. One more good thing that you've literally done to, you know, make yourself that employable resource that companies are looking out for is the financial modeling course from the Wall Street School. So, quick feedback on that, please. सो द वॉल स्ट्रीट स्कूल से जैसे मैंने अभी फाइनेंशियल मॉडलिंग क्लासेस अभी कंप्लीट करी है, दैट वाज अ शॉर्ट कोर्स, एक शॉर्ट टाइम पीरियड में आपका कंप्लीट हो सकता है, एंड साइड बाय साइड आप अपना दूसरा काम भी कर सकते हैं उसके लिए. इट टुक मी 2 to 3 months कोर्स कंप्लीट करने के लिए, एंड एब्सोल्युटली द क्लासेस वर वंडरफुल. मैं एक कंफर्टेबल बैकग्राउंड में बैठ के, कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में बैठ के मैंने वो क्लासेस अपने अटेंड करी हैं, और एब्सोल्युटली दैट वर अमेजिंग. Wonderful. तो अब मतलब, you know, you cleared your CMA Part 1 exam also in the first attempt itself. So, like, how did it feel? I'm sure your parents must be super proud of you. So, like, how was the entire experience really? Yeah, everyone is proud of me. Even I am proud of myself. You must be. I felt very nervous when I was going for exam, and even at the last moment I was praying कि बस please भगवान complete हो जाए, अच्छे से clear हो जाए. And when the result came, I was having my food and I was like, boss, the exam is cleared. Wonderful. See, I think वो पूरा जो एक process रहता है आपका training का, that prepares you for the end result. क्योंकि classes तो obviously रहेंगी. Then you have your, you know, you have your Hawk books, you have your LMS support, the PassMap facility in the Hawk software. That actually tells you how prepared you are for the exam. So it shows you are 80% ready. So you know that, you know, Yeah, right. I am in the right direction. Yeah. Or probably, you know, if it shows about your 40 to 50% ready, you know that, you know, there's more effort that needs to be put in. तो वो जो AI driven जिसे हम कहते हैं, you know, that database is there to help you support in your preparation. So I think that also, you know, plays a very, you know, critical role in your exam success.
Yeah, right. And I would suggest everyone that don't just jump to every software. Just choose one and wisely. आप एक से practice करें, अच्छे से practice करें. See, I think one LMS is more than enough because, for example, Hawk LMS already has all the past questions embedded on these LMS. तो अगर आपने सारे past questions अच्छे से solve कर लिए हैं अपने LMS पे practice कर ली है, तो जो actual exam आने वाला है वो बिल्कुल different तो नहीं होने वाला ना. Only the questions, the numbers are going to change, but the concepts, the rigor of the exam is obviously going to be same, right? Yeah, the questions were similar. कुछ क्वेश्चंस आप देखेंगे उनका जो होता है थोड़ा लेवल थोड़ा सा हाई होता है, बट इफ यू हैव द कंसेप्चुअल नॉलेज सो यू कैन डेफिनेटली क्रैक देम टू. Wonderful. So I think you're on the right path. So what is like, now, what now, what next now really? So I am preparing for part 2 now, and side by side I am also searching for internships for part 1 and the financial modeling course so that थोड़ा practical exposure मिले and obviously I can apply my skills there. Wonderful. Actually, यार भूमिका मेरे से इसीलिए मिलने आई थी because she now wants to, avail the placement services team here at the, the placement services facility here at the Wall Street School. So now she's in the right direction. She's done with her graduation. She's a part qualified CMA. She's done with the financial modeling course, and now is the time to, jump onto the placements part. So very, very soon, I'm sure that, you're going to be placed in a superb organization. Thank you, and thank you so much. Wonderful. So, a quick message that you want to convey to all those aspiring Gen Z students like you कि हाँ graduation तो करना ही करना है, but साथ साथ में और क्या ऐसा करें to make themselves, stand out from the rest of the crowd really. So I would start by saying that you should apply for the professional courses and उसमें जिसमें आपका interest हो आगे से भी कि you can do this and you are confident about that. And I would say that never rush your exams in family and peer pressure. Personally, I didn't do that. I had pressure obviously as well. But yeah, don't give exams in pressure and choose only one material and give more and more of mocks, lots of mocks. They will guide you where to do, and don't just stuck in, oh, this answer is right or that answer is wrong. See the explanation as well. Why was my answer was wrong? And if it was right, then is the explanation similar to mine, right? That's वहाँ से आपकी real improvement start होती है. And so I think conceptually, you are actually sorted. आपको पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है. And that literally shows in your results as well. Congratulations to you for that. Thank you, ma'am. Even I stuck somewhere, but obviously faculties helped you a lot. Wonderful. So this is just to, tell all the students out there कि हाँ कोई professional qualification को आप अपने graduation के साथ ज़रूर क्लब करें. और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ USCMA ही करना है. There are many other options out there as well. जैसे भूमिका ने करा, find your passion. और फिर उस पैशन को अपना प्रोफेशन बनाने के लिए find the relevant courses for it. It could be USCMA, it could be USCPA, it could be ACCA, it could be CFA, it could be any qualification basically. But हाँ सिर्फ एक ग्रेजुएशन नहीं, we need that plus extra something that makes you stand out. वो ATS compliant resume जो प्रोफेशनल्स को ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए वो तभी बनता है जब हम अपने ATS के रेज्यूमे के हिसाब से स्किल सेट को डेवलप करते हैं. सो योर कोर्सेज लाइक फाइनेंशियल मॉडलिंग, बेसिक टू एडवांस, एक्सेल, AI इन फाइनेंस, ये सब स्किल्स हैं जो कि एम्प्लॉयर्स को चाहिए अलॉन्ग विद योर ग्रेजुएशन एंड द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन. सो बस यही करना है एंड दैट्स अबाउट इट रियली. सो थैंक यू सो मच भूमिका फॉर योर टाइम एंड फॉर इंस्पायरिंग so many students out there. Thank you so much, Shilpi ma'am, for having me today here. Perfect. Thank you so much. Until next time, thank you. God bless.